Dear students, today we are going to study about dietary principles of food. This is the full plate of food. Definitely it's very charming, right? So we are going to talk about food today. Food growth and development. ये सारे interrelated हैं. आओ इसके बारे में बात करते हैं. What is food? Food may be defined as any substance or a composite mixture of various substances that we eat for the purpose of maintenance, growth and development of our body. What is growth? Growth means a net increase in the size or mass of tissues. It is due to multiplication of cells and increase in the intracellular substances. Development is defined as maturation of functions. जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे हम खाना कहते हैं. खाना हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है और हमारे ऑर्गन्स की मैच्योरिटी होती है, डेवलपमेंट होता है. Why do we need food? हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है? We eat food to satisfy our hunger and appetite, to provide energy for the vital activities of the body, to provide energy for different activities of the body, for the growth and development of body, and to prevent deficiency diseases. And what is foodstuff? Anything which can be used as food is defined as foodstuff. खाना हम इसलिए खाते हैं जिससे हमारी भूख शांत हो, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, और कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो हमारे खाने से ही आती है. हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और हमारी इम्यूनिटी बनी रहे जिससे हमें हमारी बॉडी पे किसी डिजीज़ का अटैक नहीं हो. और फूड स्टफ़ क्या होता है? फूड स्टफ़ एनी सब्सटेंस जिसको हम खाने की तरह यूज़ कर सकते हैं उसे हम फूड स्टफ़ कहते हैं. What should be our daily food plan? हमारा जो खाना होना चाहिए वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमारे खाने के अंदर ग्रेन्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए और प्रोटीन फूड्स होने चाहिए. Energy value of food, which is always counted in calories. Energy value of food is expressed in terms of kilocalories or calories. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. हमारे जो खाने की एनर्जी है उसको किस यूनिट में हम डिफाइन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी और कैलोरीज. Energy means ability to do work or the power which may be transmitted into motion, effecting a physical change or overcoming resistance. Energy क्या होती है? Energy हमारी ability to do work होती है. What is calorimeter? An instrument for measuring the amount of heat produced in any system or an organism. 1 calorie is equals to 4.128 joules. कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कैलोरीज जांचने के लिए, चाहे वो किसी इंसान में हो या जानवर में हो या फिर किसी भी सिस्टम में हो. एनर्जी वैल्यूज ऑफ फूड. टाइप्स ऑफ एनर्जी. कितनी तरह की एनर्जी होती हैं? पहली होती है हीट एनर्जी, देन फ्री एनर्जी, then kinetic energy, then potential energy, then chemical energy, then electrical energy, and then nuclear energy. Energy equivalent of food. Carbohydrate is equals to 4 kilocalorie per gram, protein 4 kilocalorie per gram, and fat 9 kilocalorie per gram. You can see fat provides maximum energy. Energy balance.
We have to maintain energy balance within the body to work efficiently. किसी भी सिस्टम को efficiently रन करने के लिए एनर्जी बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है. Consumption of energy equal to energy expended is called as energy balance. जितना भी फूड हम लेते हैं उससे जितनी एनर्जी हमें मिलती है उतनी हमें बर्न करनी होती है. दिस इज नोन एज आवर एनर्जी बैलेंस. There are two types of energy balances. One is positive energy balance. If the caloric value of food content exceeds energy loss due to heat, BMR or work, and the food is properly digested and absorbed, the balance is positive. In this case, energy stored and individual gains weight. अगर हम जो भी फूड खाते हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू हमारे एनर्जी एक्सपेंशन से ज़्यादा है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, वेट बढ़ेगा एंड इंडिविजुअल विल बी गेनिंग वेट. व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस? इफ द कैलोरिक कंटेंट ऑफ द फूड indigested is less than the energy output, the balance is negative. In this case, endogenous stores are utilized. Glycogen, body proteins and fats are catabolized and the individual loses weight. If the energy provided by the taken food is less than the energy used by the बॉडी के जो स्टोर्स हैं जैसे ग्लाइकोजन, बॉडी प्रोटीन एंड फैट्स, वो सब कैटाबोलाइज हो जाएंगे टू गेट द एनर्जी एंड इंडिविजुअल इज गोइंग टू लूज वेट. यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन एडल्ट. The energy generated by metabolism of macronutrients is used for 3 energy requiring processes that occur in the body. Basal और resting metabolic rate जिसे हम BMR या RMR कहते हैं. Specific dynamic action जिसे हम SDA कहते हैं. और physical activity. For light activity, 25 to 50% BMR is added. For moderate activity, 50 to 100% BMR is added. For heavy activity, BMR is like more than 100%. Let's talk about BMR or RMR. The energy expended by an individual in a resting or a post-absorptive state is called as basal or resting metabolic rate. It represents the energy required to carry out the normal body functions such as respiration, blood flow, muscle tone, ion transport or maintenance of cellular integrity. Normal value of BMR in an adult male is 2000 kilocalorie per day and in adult female it is 1600 kilocalorie per day. Basal metabolic rate. Basal conditions में 12 hours of fasting, overnight sound sleep, complete mental and physical rest, comfortable environmental temperature and pressure and awake. What are the factors which can affect your basic metabolic rate? First is age, which is higher in younger people. It is sex, it is higher in the males. Thyroid hormone, it can always result in the increase of BMR. Growth hormone भी BMR को बढ़ाते हैं. फीवर, इन्फेक्शन भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं. अगर आपकी स्लीप डिक्रीज होती है या स्लीप इंक्रीज होती है वो भी आपकी मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करती है. न्यूट्रिशनल स्टेटस. BMR डिक्रीजेस इन स्टारवेशन. अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपकी BMR लो हो जाएगी. क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है. जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ पे भी उनकी BMR ज़्यादा होती है. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ऑल्सो इंक्रीज इन द बेसिक मेटाबॉलिक रेट. Specific dynamic action, that is SDA.
What is SDA? SDA is defined as the extra heat production over and above the actual calorie value of a given food when food is metabolized within the body. It is regarded as a calorigenic action of food and diet-induced thermogenesis. The production of heat by the body increases as much as 30% above the resting level during the digestion and absorption of food. This effect of food is called as thermal effect of food. It may last up to 6 hours after meal. SDA or thermic effect of food. The thermic effect of food is due to obligatory energy expenditure that occurs during the assimilation into the body. It is 30% for protein, 6% for carbohydrate, and 4% for fat, and 10% for mixed diet. You can see this very clearly in this diagram. This diagram clearly shows everything. Causes of thermic effect of food. ये thermic effect या SDA क्यों होता है? The exact cause of SDA is still unknown. It may occur due to increased sympathetic discharge after the feeding due to increased secretions of catecholamine hormone. SDA of protein is due to deamination of amino acids in the liver after their absorption. SDA of carbohydrate is due to energy expenditure of the conversion of glucose to glycogen. SDA of fat may be due to its storage, metabolization and oxidation, direct stimulation of metabolism by liberated fatty acids. Why protein has the highest SDA? The chemical reaction for the breakdown of protein during the digestion is more than carbohydrates and fats. That's why protein has got the highest SDA. Some of the amino acids directly stimulate the metabolic rate. जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ मेटाबॉलिक एसिड डायरेक्टली मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं. इस कारण से ही प्रोटीन का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है. Why a gram of fat gives more, twice as much calorie as by the same amount of carbohydrate? अगर हम 1 ग्राम फैट को बर्न करते हैं और उसी अमाउंट का हम कार्बोहाइड्रेट बर्न करते हैं तो हमें डबल एनर्जी मिलती है फैट से. उसका कारण क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन इन फैट इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट के अंदर 16 से 20 कार्बन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट में 3 से 10 कार्बन होते हैं. So to break down fat, more oxidation is required, more energy is liberated than carbohydrates. What is significance of SDA? The SDA of food must be considered in calculating the total number of calories required by an individual. The higher SDA of protein indicates that it is not a good source of energy. Fat is the best source of energy due to its low SDA. Due to high SDA, protein-rich food makes us feel warm in cold weather. Physical activity. Physical activity of an individual provides the greatest variation in energy expenditure. The amount of energy consumed depends upon the duration and intensity of exercise. The daily expenditure of energy can be estimated by carefully recording the type and the duration of all activities. I think we should stop here. I will continue this in the second video. Thank you so much.